स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 42। टॉपिक है डेप्रीवेशन, चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन, पेपर है 1 चैप्टर 5। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने सोशल एक्सक्लूजन देखा था, आज हम देखते हैं डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीवेशन लार्जली रेफर्स टू डिनायल ऑफ रिसोर्सेस। डेप्रीवेशन अगर थोड़ा सा ब्रॉड डेप्थ में जाएं तो डेप्रीवेशन रेफर्स टू वेयर द पर्सन्स एक्सेस टू रिसोर्सेज इज रेस्ट्रिक्टेड, वेयर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस होता है डेप्रीवेशन के अंदर। द फोकस इज ऑन एक्सेस टू रिसोर्सेज। सोशल एक्सक्लूजन में फोकस था कि आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता, और कई बार वो एक्सक्लूजन doesn't have any necessary connections with the resources as such. People may not lack any resources but still they are excluded. Example, newly rich या Novak's rich का जो मैंने example दिया था आपको. So deprivation refers to lack of access to resources. अब अगर economic terms में देखें तो deprivations normally poverty के level पे देखी जाती है, but in sociology the deprivation is understood from a very broader perspective. There are two types of deprivations. One is absolute deprivations and second is relative deprivations. Absolute deprivation को हम equate करते हैं poverty से, और जरूरी नहीं सोशियोलॉजी में सिर्फ पॉवर्टी हो, वो राइट्स का भी एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स हो सकता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन इज द कॉन्सेप्ट व्हिच केम आउट थ्रू द राइटिंग्स ऑफ स्टॉफर, व्हिच वाज इन डिटेलली डिस्कस्ड बाय आर के मर्टन इन हिज थियरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप। Relative deprivation refers to where a person largely feels deprived in comparison to certain other sections. These people may not be absolutely deprived, but they may feel deprived when they compare themselves to a positioned person in higher up above the hierarchy or stratifications. For example, it is strongly seen in the entire world society among middle class. मिडिल क्लास में स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन दिखते हैं। ऑल्दो द रिलेटिव डेप्रिवेशन फिनोमेना इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू मिडिल क्लास, इट इज ऑल्सो प्रिवलेंट अमंग द लोअर क्लासेस एंड एज वेल एज द अपर क्लासेस। अडानीज को देख के शायद अंबानी आज रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील कर रहे होंगे। अब जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर स्टार्टिंग आवर बैच 2 of sociology from 9th of May. If you really want to take your sociological understanding to the next level, use the code get into the batch. You know the importance of batch if you have been following my series as such. But yes, get into the batch if you are seriously dedicated to understand sociology. If you are largely trying to focus on shortcuts which I may give, then I don't think this batch is really meant for you. Relative deprivations, deprivations और social exclusion की relationship क्या है? Because normally the concept of deprivation is pretty much simple. The deprivations could be of multiple forms. It could be social, it could be cultural, it could be legal, it could be right based, it could be economic, it could largely be political deprivations as well. But however, UPSC ये deprivation और exclusion को काफी connect करके क्वेश्चन पूछता है, तो I just thought कि let me open up this debate rather than just in silos just discussing the concepts and their meanings and then finishing it up. If you look into the deprivation and social exclusion relationships, there are, as Weber advocated, the reality is vast, unorganized, chaotic and dynamic, and therefore an absolute objective understanding of reality is not possible. Since the reality is so vast and dynamic, we cannot have a precise cause-effect relationships. There are multiple forms of relationship which can be present between deprivation and social exclusions. There are relationships where a person if deprived can lead to their social exclusion. Take an example of poverty. Deprivation feel होता है, दूसरी जगह में exclusion हो जाता है, जैसे education का। कई बार सोशल एक्सक्लूजन होता है आपका पहले, एंड सोशल एक्सक्लूजन कैन लीड टू डेप्रिवेशंस। वुमेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कास्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लार्जर सोसाइटीज एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सक्लूजन दे बिकेम द विक्टिम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल। कई बार कोई डेप्रिवेशन नहीं है आपका, बट स्टिल यू लार्जली रिमेन सोशली एक्सक्लूडेड। न्यूली रिच या फिर अपर क्लास वुमेन्स अगर लो तो वो भी यहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे
डेप्रिवेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं सोसाइटी में से। कई बार आप एक्सक्लूडेड नहीं हो, लेकिन आप डिप्राइव्ड हो सकते हो। इंडिया में देखें तो मिडिल क्लास, या फिर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स इन इंडिया आर नॉट सोशली एक्सक्लूडेड एज सच, कहीं पे भी उनका एक्सक्लूजन नहीं है, बिकॉज दे वर द डोमिनेंट कास्ट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन इन द रिचुअल हायरार्कीज वेयर दे वर कंसिडर्ड एज मोर प्योर। कोई exclusion नहीं, but we do see today they are becoming the victims of deprivations as such. Therefore, there are multiple relationships which are present between exclusions and deprivations, but one cannot precisely say that exclusion leads to deprivations or deprivation leads to exclusions, as one can be cause, other can be effect, or vice versa. If this is the way you want to really understand the concepts by applying it and by correlating the different concepts present in sociology, then this is the batch you should definitely get in, because normally आप किताबों में सिर्फ deprivation क्या है, forms क्या है, causes क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक थंब रूल देता हूं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कॉजेज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन या कॉजेज ऑफ डेप्रीवेशन, सारे के सारे कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी वाले लिख देना, बिकॉज दीज डेप्रीवेशंस एंड एक्सक्लूजन आर नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक कंटेंट पढ़ के 5 बार उसको अलग अलग जगह क्यों डिस्कस करना है? नॉर्मली दोस पीपल डज दोस डिस्कशंस हु डोंट हैव द कंटेंट देमसेल्व्स। यहां पे ये रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करनी होती है, एंड बिलीव मी, इन द लास्ट बैच इट टुक मी मोर देन 2.5 hours टू डिस्कस दीज रिलेशनशिप्स। इतनी डेप्थ है, कैसे हिंदू के अंदर कई आर्टिकल्स आते हैं जो यहाँ पे पुट अप किए जा सकते हैं। तो अगर आपको इस अप्लाइड मैनर में सोशियोलॉजी पढ़नी है, देन दिस इज सर्टेनली अ प्लेस व्हिच यू शुड definitely be in order to get that real in-depth conceptual clarity with an absolute application oriented focus. But yes, I really don't have any shortcuts. If you're looking for that, then this is not the batch where you should definitely be. Thank you. Have a nice day. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।